सर लास्ट क्लास में कल हम लोग एक्चुअली पढ़ाया था फर्स्ट दैट इज ऑलरेडी वी हैव डिफाइंड। यस सर। हम लोग डिफाइन किए थे, फर्स्ट नेटवर्किंग डिफाइन किए थे सर, उसके सर। बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ाया था लैन ओएन एंड मैन। यस सर। LAN, ON, MAN, and the PAN. LAN is the local area network, MAN is the metropolitan area network, Yes PAN sir. is the personal area network, the Bluetooth we are using. We can say this is the PAN, personal area network. Yes sir. And there is something is the ON, wide area network. Internet, that is we have to say this is the ON. Right. Yes. According to characteristics भी हम लोग उसको नेटवर्क को तीन मेनली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेटवर्क, वन इज द सिंप्लेक्स, एक है हाफ डुप्लेक्स, एक है फुल डुप्लेक्स, वो भी डिफाइन किए थे। Yes sir. Simplex is one-sided transmission, one side transmitter and one side receiver. Yes So sir. like the radio and the TV, like on that. Yes sir. And half duplex में in the time T1, someone is transmitting, at the time T2, another Yes one sir. is transmitting. Transmitting. Yes sir. Sometimes I have to transfer some data, then I Yes have sir. to switch, then I have to in another mode. Now I am in the receiver mode. At the moment you are saying, and I have to receive. So sometimes Yes. I am the transmitter, sometimes you are the transmitter, like on that. Yes sir. और एक पढ़ाया था, that is the full duplex. Actually in the mobile phone or in the real life, most of the time when we have to communicate, Yes actually sir. we are using the full duplex mode. आपका सेंडर है रिसीवर कैन Sir. ट्रांसमिट एंड रिसीव एट द सेम टाइम। तो आप भी Yes sir. देखेंगे लैंडलाइन में, आपका घर में यदि लैंडलाइन का फोन रहेगा, इफ यू यूजिंग अ लैंडलाइन फोन, देयर आर एक्चुअली टू वायर्स आर देयर। Yes अभी sir. केबल को ओपन करेंगे तो आपको दिखाई देगा देयर आर टू वायर, Yes sir. one for the receiving the data and one for the transmitting the data. This look like on that way, simple. Yes sir. अच्छा, लास्ट क्लास में कल उतना थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते हमने यूजुअली एक तो पढ़ाया था स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, different types of topology पढ़ाया था, that is regarding the defined geometrical positions of the networking devices. Yes Networking sir. device में जोड़ना था, networking means multiple devices will be connected with myself. Yes sir. तो ऐसे उसको geometrical positions कैसे रहेगा? Based on that one, we have to actually for the different types of infrastructures we need. Yes sir. तो डिफरेंट टाइप से टोपोलॉजिकली आपको डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत होता है। अब जितना साइबर कैफे में देखेंगे, वी आर यूजिंग सम सिंपल हब, हब बोल के Hub. HUB हब, Hub sir. दैट इज ए Yes sir. सिंपल, आप देखेंगे हब, so Yes sir. actually that is a device to make a LAN. We will able to connect one target. There are maybe 5 machines, there are 10 machines. I have to all the 10 machines should be in a network. So I Yes sir. have to install some hub, HUB. Hub. Yes sir. Usually in the room also, if I have 4 machines and I want to make a connection, I Yes sir. want to make a network. At that Yes moment, I sir. have to install one hub. The hub is actually it is आपको उतना कॉस्टली नहीं है, इसलिए we are हाँ, preferring this जी सर। hub device. But switch is better than the hub. There is another device that is the switch. स्विच अच्छा। SWITCH. The switch, if I am preferring the switch, थोड़ा सा शेयर करते हैं, लिख नहीं पा रहे। जी सर। आपको दिखाई दे रहा है पेन ब्रश सर? हाँ सर दिख रहा है सर। ओके, okay, we are starting. The first device is that is I am talking regarding the hub. I am talking regarding there is one device that is we have to talk, that is regarding I am talking regarding the hub. And yes, switch is the better than the hub. Switch जी, is the better than the hub. yes sir। And there is another device. Actually, this is we are referring. This is a two-layer switch. Two-layer switch. This is a two-layer switch. Yes. And there is actually in the real life we are using something, the three-layer switch. Three-layer switch we also are using. Three-layer switch we are using. We are referring this is as a router. Sometimes we
pronounce it as a router. In the southeast में आप देखेंगे most of the countries they are using the pronounce it as a router. In which route I have to transfer the data by packet. And sometimes in the India, in the here in Bangladesh, all this area, usually we are pronouncing it as a router, ROUTER. But actually, this is one device. So it is working three layer. Three layer means actually as today we have to discuss regarding the layer. Actually, there are actually in this one in the networking we are using some. We are referring this one. These are actually in the networking there are lots of functionalities there. So to cover all the functionality, if we have to divide it into different layers, then it will be easy for us to handle. For that purpose, actually, we are using the layers. But actually, in the networking module, actually, we have to refer it as a total networking module. Real life, में that is possible. In real life, में हम लोग बार बार बोलेंगे this is a networking module. At that moment, we will never say, sir, I am installing the physical layer. I am installing the data link layer. I am installing the network layer. Not like on that. I will Okay. say, and now at this moment, operating system is installing the networking module. We have to refer Yes. it like on that. But Okay. if I'm using the layer, it is just I am going to segment all the functionalities should be segmented, and for the defined devices, just say this layer, this device, this device is working in the as a three layer. It is Three working layer. in the physical layer, Yeah. it is working in the data link layer, and it is working in the network layer. So when I have to going to prepare this device, so Yes. all the functionality of these three layer that I have to embed it in this device. Yes. All the functionality. जितना functionality रहेगा all the device पे जितना functionality है वो router के अंदर हमने डालेंगे. It will be Yes. easier for me. I am using something the hub. So it is working in the physical layer. The Yes, sir. physical layer का जो functionality रहेगा, physical layer का जो functionality रहेगा, all Yes. the functionality should be embedded here. Yes. So this is the two layer switch. So all the functionality of the two layers, physical layer and the data link layer, all functionality of these two layer that should be embedded in this one. Is it okay? Okay, sir. For that purpose, actually, we are it is easier for us to functional to find the functionality of the each layers. Divide all the networking module. हम लोग से 7 module में उसको divide करेंगे. It is easier for us to handle. Actually, Yes, sir. कैसे how it is working? Today we have to discuss that part. And actually, that is also very fundamental. कितना तक cover हो सकते. Okay, Yes. just a second. सर काइंडली आप लोग आपका नेम एंड रोल नंबर काइंडली मैसेज बॉक्स में थोड़ा सा टाइप कीजिएगा. एक्चुअली फ्रॉम देयर वी हैव टू टेक योर अटेंडेंस. ओके सर. Is it visible? Yes. Okay. Today mainly I am going to discuss regarding I have to discuss the 7 layers models. This is very important one. Please look at here. Actually, the layers it is looking like in this one. So this is the physical layer. This is the data link. Next, above the physical layer, actually data link layer is there. Above the data link, there is a network and the transport and the session and the presentation and the applications.
Actually, for each layer, we have to prepare. There are two or three functionality. हर layer का हमको दो व तीन functionality हमको पता होना चाहिए. We should have the idea. This is what is the functionality of the physical layer. Usually, there is some question is coming. जब आपको सर physical layer का तीन functionality बोलो, data link layer का सर तीन functionality बोलो, network layer का कुछ functionality बोलो, like on that way. Is it okay? Yes. Okay. So, sir, physical layer. First important thing is that I have to discuss regarding the physical layer. I'm going to discuss regarding the physical layer. नाम से ही पता चल रहा है physically जिसका existence रहेगा. That should be some there will be some physical existence will be there. This is the physical interface between the data transmissions device and the transmissions medium or network. एकदम that is the lowest layer where there is I am connecting with the link or some cable maybe. Actually, that layer in this one between the data transmissions device and the transmissions medium or network specifies raw transmission details like connectors. क्या कैसे कनेक्टर रहेगा, किस टाइप का कनेक्टर हमको बनाना था, मीडियम क्या रहेगा, वोल्टेज लेवल क्या रहेगा, किस टाइप का एनकोडिंग यूज करेंगे. कल कुछ एनकोडिंग हम पढ़ा रहा था, मैनचेस्टर और एनर्जेड एल और एनर्जेड आई लाइक ऑन दिस. Yes. In this layer we have to specify the physical topology also. And based on this one, it will be decided which type of physical infrastructures I need. Some type of topology भी इसमें decide होता है. Either I have to use the star. At that moment, my infrastructures will be different. If I am using the bus topology, my infrastructures will be different. So line configurations कैसे रहेगा, point to point और multi point. कल ये सब टर्म हमने डिफाइन किए थे. Point to point कैसे होता है, जहाँ पे हम लोग बोला था मेरा मशीन का साथ I am connected one device and there is one dedicated link. Then at that moment we have to refer point to point. और एक ही लिंक का साथ मल्टीपल डिवाइस आर कनेक्टेड तब हम लोग बोलेंगे मल्टी पॉइंट. तो आपको बस टोपोलॉजी देखने से ही पता चलेगा दिस इज सर एक्चुअली दिस इज द मल्टी पॉइंट. Multiple devices are connected with that one. So in this one that will be also decided the transmissions mode कैसे रहेगा, simplex होगा ना half duplex होगा ना full duplex होगा. And for the simplex, what will be the infrastructures? For the half duplex, the infrastructure will be different. For the full duplex, this will be different. Yes or no? Yes, sir. but आप लोग सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स में हमको दो डिफरेंस बोल सकते हैं, देखते हैं आप लोग कैसे. एक्चुअली टाइम कांस्टेंट शो इतना ज्यादा है, आई एम नॉट एबल टू डिस्कस एकदम फटाफट के ऊपर डिस्कस करके जा रहे हैं. अच्छा आप लोग हमको बोलिए थोड़ा सा सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स के अंदर कुछ डिफरेंस हमको बोल सकते हैं, देखते हैं आप लोग कैसे एनालाइज कर रहे हैं, हाउ यू आर एनालाइजिंग. पहले श्रेया बोलो. Yes, sir. May I? Yeah. Okay. So simplex सिंप्लेक्स और हाफ only डुप्लेक्स communication with fixed डेफिनेशन छोड़ के और कुछ एक्सेप्ट द डेफिनेशन definition show प्लीज. this. डेफिनेशन छोड़ के और एक दो पॉइंट देखते बोल सकते हैं. Okay. Definition छोड़ के. डेफिनेशन में तो आपको पता है सिंप्लेक्स में देयर इज वन साइडेड वन डायरेक्शनल One way communication. बट इन द वन वो तो डेफिनेशन हमको पता है छोड़ के. अच्छा देखते हैं आर मिस्टर आर मोहन. एक्चुअली हम लोग कंप्यूटर मतलब एज ए एंड यूजर थोड़ा अच्छे से यूज करते हैं, लेकिन ये थोड़ा मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है तो ये सब टेक्निकल चीजें मैं सीखा नहीं था पहले कभी, तो इसीलिए एज ए यूजर हम अच्छे से यूज कर लेते हैं, कोडिंग फोडिंग लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये थोड़ा डिटेल चीज होता है, ये हम कोई पढ़े नहीं है, तो अचानक ये पूछने से या अचानक ये चीज बोलने से मतलब थोड़ा समझ में नहीं आता है, इसको थोड़ा डीपली सर स्टडी करना पड़ेगा मुझे. अच्छा ठीक है, हमने आपको जितना मटेरियल जरूरत होगा प्लीज मेरे साथ थोड़ा कांटेक्ट में रहिए. ऑलरेडी हमने मेरा मेल आईडी दे रहे हैं. आई विल गिव यू पीपीटी, आई विल ट्राई टू गिव द 5 इयर्स का कुछ सॉल्यूशन हम आपको देंगे एंड आई विल हेल्प यू. Sir, I am actually facing a problem. Sir, can I discuss it now? Yeah. Sir, what is happening is, as I told, my background is commerce, but I have been working on computers. I am a computer graphics faculty also.
So as a user, end user, I am able to do many things, but as per theory is concerned, I am not able to understand this kind of theories deeply. Just say networking, data structure and communication. That also I was studying, but lightly. It is not. I'm not able to understand. उसको थोड़ा deeply study करना पड़ता है. But as my background is commerce, I'm not from science also. So इसीलिए जो 11th और 12th क्लास का जो basic mathematics रहता है, many concepts of this is related to actually that what I understand. So it is actually I'm facing difficulties in understanding this kind of concepts. मतलब जैसे हमको कुछ लिखना पड़ता है, जैसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आता है, तो उसको हम लोग मतलब एज एन एवरेज नहीं लिख पाते. जैसे मैं एमबीए कर रहा था इग्नो से, तो कुछ भी एनालिटिकल चीजें मतलब उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं इंग्लिश में लिख सकता हूँ. But as this is technical things, I want to actually understand, but systematically I am not able to get it easily. No, तो सर कैसे? actually, sir, fault is not only from your side. Actually, the fault is from our side also. जी एक्चुअली सर. हम ये आपको बोला से सर, एक्चुअली इसमें हम लोग फॉर ईच एक सेमेस्टर में हमको 40 to 45 क्लास यूजुअली वी आर गेटिंग. हाँ सर, हम श्योर. लोग थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करते हैं. एज जी ए सर. लाइक इफ आई एम डिस्कसिंग इन द क्लास, आई एम डिस्कसिंग विद सम एग्जांपल्स, आई एम सेइंग सम स्टोरी, जी आई सर. वांट टू रिलेट माय सब्जेक्ट मैटर विद दैट वन. तो यस सर. इसमें अभी क्या हो रहा है, अभी हमको यदि आपका सिलेबस को खाली बोलना है तो हमको 2 दिन 1 घंटा में कुछ नहीं हो पाएगा. हाँ हाँ हाँ. सर मैं और सर और एक सेकंड हम बोल लेते हैं पहले सर. पहले जी फर्स्ट सर. जी सर. मेरा बात थोड़ा सा सुन लीजिए. सेकंड थिंग सर, पहले आप जस्ट फॉरगेट दिस टर्म. जी सर, आई एम फ्रॉम द कॉमर्स. अगेन आई जी एम सर. सेइंग सर, आप हाँ. एकदम पॉजिटिव रहिए. हम अभी अभी भी आपको बोल रहे हैं, दैट जी इज सर. ऑलवेज इट विल बी हाउ यू हैव टू ऑब्जर्व, दैट इज इंपॉर्टेंट. यस जैसे सर. सर देखिए, हमने आपको ये वाला क्वेश्चन हमने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंप्लेक्स एंड द हाफ डुप्लेक्स. जी सर. तो आप उधर से स्टार्ट कीजिए. फर्स्ट यू थिंक लाइक ऑन दैट वे. जैसे जी सिंप्लेक्स बोलने से सर बोला था ये रेडियो एंड टीवी का बात कर रहा था. रेडियो जी एंड जी टीवी. और जब अभी हाफ डुप्लेक्स का बात किए थे सर, एक्चुअली बात किए थे वॉकी टॉकी का. जी सर. पुलिस लोग जो वॉकी टॉकी यूज करते हैं ऑन द वैन, आप देखेंगे जैसे हाँ जी जी. समटाइम दे आर सेइंग, और फिर उसके बाद समटाइम नाउ दे आर सेइंग यू नो नाउ ओवर. देन आफ्टर दैट फ्रॉम अदर साइड समवन इज सेइंग लाइक ऑन यस दैट. सर. In the जी war सर. movie also you will find sometimes they are sending a message, after that will over. Then the जी सर. next message they are receiving from that side. ये जी. जो जितना बोला, इसी को आप यदि थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो यू विल एबल टू गेट वन डिफरेंस लाइक इन दिस वे. ओके सर. First one, that in the simplex, sir, in the one sided there should be transmitter, in the other side there will be no transmitter. In one side actually there will be a transmitter, one sided there will be receiver. ऐसे रहेगा. जी सर. हम लोग थोड़ा सा शेयर कर लेते, थोड़ा मेरा कंटेस्ट को, पहले आपको इजी भी होगा. दिखाई दे रहे? हाँ सर, दिखाई दे रहा है. अच्छा, देखिए वी हैव टू इधर से स्टार्ट करना है. तो सर आपको जैसे हमने बोला, जितने हो गए, हमने बोला था फर्स्ट डिफरेंस बोलने के लिए बोला था, जो सिंप्लेक्स बोला था, और हमने आपको बोला था हाफ डुप्लेक्स. मे बी आपको एग्जाम का टाइम में भी ये वाला क्वेश्चन दे दिया, आपको आता नहीं है, तो अभी आप सोच के कैसे लिख सकते, थोड़ा सा उतना सोचिए. तो सिंप्लेक्स बोलने से सर बोला था जैसे इन दिस वन सर, ट्रांसमीटर इन वन साइड, ट्रांसमीटर रहेगा सर वन साइड में, इन वन साइड, और रिसीवर रहेगा इन द अदर साइड. इधर सर. अदर साइड तो शॉर्ट में लिखा है अदर साइड. बट इन दिस वन इट इज हाफ डुप्लेक्स. सर इधर भी से आपका रहेगा, ट्रांसमीटर रहेगा एंड रिसीवर रहेगा फॉर दिस डिवाइस, एंड इन दिस डिवाइस आल्सो देयर विल बी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. यू आर एग्री विथ मी? यस सर. हाफ डुप्लेक्स में इधर भी ट्रांसमीटर रिसीवर रहना पड़ेगा, इधर भी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर रहेगा. समटाइम्स इफ आई एम टॉकिंग, at the moment the connection will be like this one, and Okay. when he is talking, this person is talking, then the receiver connections will be like in this one. You are agree with me? Yes sir. तो सर सिंप्लेक्स का एग्जांपल हम लोग ऐसे देख सकते हैं. इट इज सपोज रेडियो. रेडियो में कैसे होता है? हाँ, रेडियो टीवी. रेडियो टीवी. इसमें it is looking हाँ. like in this one. ट्रांसमीटर एक साइड में रहेगा, रिसीवर एक साइड में रहेगा. जी जी जी. अब देखिए यहीं पे ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों की एक साथ रखेंगे. इफ यू कीप इट एट द वन डिवाइस, आपका ये वाला कॉस्टली हो जाएगा.
it हाँ will सर, be costly. सर। You are तो also agree with me. जैसे टेलीफोन होता है उसको वैसे रख सकते हैं। टेलीफोन मतलब आपके पास जी सर। ट्रांसमीटर भी रहेगा, रिसीवर भी रहेगा, तो इट जी विल बी सर। कॉस्टली। यस सर। आपका ये वाला ट्रांसमीटर रिसीवर दो साइड में, एक साइड में ट्रांसमीटर है, एक साइड में रिसीवर है, हाँ, इसलिए इसका आपका क्या रहेगा, दिस इज चीप। cheaper, अच्छा। देखो डिफरेंस हमने बोलने के लिए बोला, यू कैन एबल टू फाइंड इट आउट। अब थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा, जी छोड़िए मत। अब पहले एनालाइज कीजिए। अच्छा, सेकंड जी थिंग, और एक पॉइंट देखिए, से आर यू एबल टू गेटिंग मी? Yes, sir. Okay. So in this one, there is another one. Sir, in this device, sir, Yes. this is the sender for the simplex. This is the sender. This is the receiver. Yes. They have to dedicatedly. I have to using this connection. Yes, sir. Sender will always using this connection. Okay. But in this case, as sender and the receiver is there, at the time T1, he will use this one. This person will use at the Yes, sir. time T1, at the Yes, sir. time T2, this person will use. Yes, sir. So I have to share the bandwidth. Yes, sir. I have to share the bandwidth. Bandwidth. Share the bandwidth. Yes, sir. हमको share करना पड़ेगा. जी सर। You are agree with me? Yes, sir. In Agree. this one, this is the dedicated. This is the dedicated. अच्छा। क्यों बोल रहे हो, वो भी आपको पता हो रहा है क्यों डेडिकेटेड बोला चिन्मय सर? Yes, sir. तो एक्चुअली यू हैव टू एनालाइज लाइक ऑन दैट वे। जो कुछ पढ़ेंगे, बट आपको पढ़ने का टाइम में हमने आपको बोलेंगे लैन और वाइन का अंदर डिफरेंस है, आपको Yes, sir. सोचना है या एक्सेप्ट द डेफिनेशन हमने और क्या क्या पॉइंट बोले, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। Yes, sir. और सेकेंड थिंग, और एक चीज जो हमने आपको बोलेंगे, जितना हमने आप लोगों का कॉपी है कि इग्नू का कॉपी है, लास्ट 20 ईयर्स हमने चेक कर रहा है, हमने 20 नियरली 18 ईयर्स हमने जी। कॉपी चेकिंग कर रहा है, उस Yes, sir. एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि Yes, आप sir. लोग व्हेन यू आर राइटिंग, ऑल द स्टूडेंट्स आर राइटिंग, Yes, एक्चुअली sir. दे आर मेकिंग सम मिस्टेक्स क्या कर रहा है ना, देखिए ऑल एक्चुअली यू हैव टू कीप सम Yes. डायग्राम्स। आपको कोशिश कीजिएगा हाँ जितना सर। हो सके डायग्राम देने के लिए, ट्राई हाँ टू जी। गिव एज मच एज डायग्राम्स। Yes. If I am discussing the topics multiplexing, if I am discussing the topics encoding, if I am discussing the topics topology, if I am discussing the OSI layers, always Yes, try sir. to give that will give you always some extra marks. Okay. And try to find the technical points. Please Yes, try to, you don't write too much, rather you focus on the technical point. Yes, sir. Sure, sir. टेक्निकल पॉइंट जैसे हमने अभी बोला, 2-3 पॉइंट जिसमें सभी ने एग्री रहेंगे। जी। अब यूजुअली टेक्निकल पॉइंट एंड टर्म्स, Yes, sir. टेक्निकल पॉइंट एंड टर्म्स को थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस दीजिए, जी सर। इट विल हेल्प यू। ओके और सर, अभी आपने देखिए जी सर। हाँ बोलिए। सर आपने सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स बताया था, और एक लिखा था सर ओनली डुप्लेक्स, वो थोड़ा फुल बता सकते हैं? डुप्लेक्स और एक बोला था फुल डुप्लेक्स। हाँ सर, फुल डुप्लेक्स। सर आपने जो रिसीवर और सेंडर का जो दिखाया था, आई थिंक दैट वाज हाफ डुप्लेक्स। हाँ, सर सेंडर फुल रिसीवर डुप्लेक्स, बट एट द टाइम T1 जब सेंडर काम करेगा तब और एक का रिसीवर काम करेगा, दोनों का सेंडर एक साथ काम नहीं करेगा। बोथ द सेंडर्स विल नॉट एबल टू फंक्शन एट ए टाइम। एट ए टाइम। ओके ट्राई सर। टू गेट माय पॉइंट। एट ए टाइम वो कभी भी काम नहीं करेगा। देखते हैं हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स का अंदर डिफरेंस दिखा रहे। देखिए हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, जैसे इसका जो सेंडर काम करेगा, सेंडर एंड दिस इज द रिसीवर एंड दिस इज द अनदर सेंडर एंड अनदर रिसीवर। यस जब सर। दिस सेंडर विल फंक्शन, ये रिसीवर का साथ काम करेगा, हाँ जी। and when it will work, then it will like on that. But ओके it is working at the time T1, ये Yes, काम sir. करेगा आपका time T2. ओके सर। But for the full duplex, actually Okay. it is looking like in this one: sender 1, receiver 1, यस सर। sender 2, receiver 2. Already there is a there are two links are already, ओके two connections are already, and both of them can use simultaneously. अच्छा। वो एक ही साथ यूज करते थे, जैसे हमने अभी हम और आप अभी बात कर रहे हैं। इफ हाँ आई एम सर, टॉकिंग यू आर आल्सो टॉकिंग, हाँ सर, दिस इज फुल डुप्लेक्स। एट द सेम टाइम में दोनों ही एक साथ काम कर सकते हैं। मोबाइल में जो हम लोग बात कर रहे हैं, इफ आई एम जी टॉकिंग जी इन द मोबाइल, both of us can talk, but if I am talking in the walkie talkie, when I have Yes, to sir. talk, you cannot,
After Okay, I हाँ have completed my sentence, then I will ask, sir, now you can say. Then I have to switch off my sender side. Then I have to only repeat. okay, we have to press a switch, I think. Yeah. बोलने के लिए एक स्विच और रिसीव करने के लिए एक रिसीव स्विच। करने के लिए और एक switch. बस that जी is. जी, यस सर, नाउ पर अंडरस्टूड। दोनों का एक साथ काम नहीं कर सकते। वही हाँ हम सर, बोला कि आप इफ यू एबल टू गेट इट, यदि उसको यस सर, फंडामेंटली आप उसको समझोगे, यू विल हाँ एबल सर, टू आंसर। ओके सर, तो जितना टॉपिक्स रहेगा, ट्राई टू, कि हम तो जितना हो सके हमने आपको हेल्प करेंगे। कभी कभी जी जी होगा तो व्हाट्सएप में आप हमको थोड़ा सा मैसेज देंगे। इफ जी आई एम सर, गेटिंग द टाइम, आई विल क्लियर योर डाउट्स, आई विल सेंड यू द नोट्स, आई हैव नो प्रॉब्लम। हाँ, But sometimes even I will give you some links also. Just sir, यस सर, I am not able to get the multiplex. Sir, हाँ I सर, am getting the problem in this area. So जी जी, sometimes यस maybe I will take a class, or sometimes maybe I will give you some link. Yes, sir, यस सर, go to this one. Maybe this is a 15 minutes video. That जी जी, video is very helpful. You will able to यस, get it. So ओके सर, but that will depend on your interest. If you ask me, then I will going to deliver. यस Otherwise, सर, sometimes others are thinking, no, why sir is saying so much like on that way. If नो it is सर, based on your interest, if you यस सर, send me any message, I'll give you the reply. यस सर, श्योर सर, थैंक यू सर। Okay. जी Now we have to start regarding the first. I have to discuss regarding the layering. Just हम लोग start किए थे, जिस सर जी सर, फिजिकल लेयर करा रहा था। फिजिकल लेयर, जी सर, फिजिकल लेयर हमने स्टार्ट किए थे। हाँ जी फिजिकल लेयर, सर फिजिकल लेयर मैंने एक्चुअली देयर इज सम फिजिकल डिवाइस जहाँ पे आपका यूज होगा। ऑल द जी फिजिकल डिवाइसेस आप जहाँ पे यूज करते हो, जी ये इसके नाम है फिजिकल लेयर। तो जी फिजिकल डिवाइस कहाँ पे यूज करते हैं सर? सर आपको तो पहले यू कैन नॉट सेंड द एबीसी, कल भी पढ़ाया था। एबीसी सेंड भी सेंड नहीं कर सकते, जी 0 1 भी सेंड नहीं कर सकते। जी 0 and 1 also I cannot send. I have to convert it in a signal like in सिग्नल, जी तो सो बीट से सिग्नल बनाने के लिए कन्वर्ट बीट से सिग्नल एंड सिग्नल्स, बीट से सिग्नल एंड सिग्नल टू बीट बनाने के यस, लिए आपको फिजिकल लेयर का जरूरत होगा। ओके सर, फिजिकल लेयर का जरूरत। द फर्स्ट पॉइंट यू रिमेंबर वन पॉइंट, ये सर यस बोल सर, दिया फिजिकल लेयर का फर्स्ट फंक्शन, सर बीट जी से सिग्नल बनाना था, सिग्नल से बीट बनाना है। तो जी ये सर, जो इनकोडिंग होगा, दैट जी इनकोडिंग डिकोडिंग विल बी डन बाय द फिजिकल। इज इट ओके? ओके सर, अच्छा, सेकंड पॉइंट, फिजिकल लेयर का और एक फंक्शन बोलते हैं। फिजिकल लेयर का और एक फंक्शन क्या होगा ना सर, जहां पे सर टोपोलॉजी, टोपोलॉजी करने के लिए, टोपोलॉजी डिसाइड करने के लिए आपको पास इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत होगा। समटाइम्स जी यू हैव टू यूज द हब, समटाइम्स यू हैव टू यूज द स्विच, जी समटाइम्स यू हैव टू यूज द सम बस, बैकबोन बस यूज करोगे। जी सर, So sir, for the topology also, that will be also we have to that will be decided by the physical layer. जी यहाँ पे डिवाइस का जरूरत होगा, जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर। जो कनेक्ट करने के लिए आपको तो बस कनेक्टर का जरूरत होगा। सर ये जी डिफरेंट टाइप का कनेक्टर जो होगा, ये ऑल आर जी फिजिकल डिवाइसेस। ये कहाँ पे होगा सर? फिजिकल लेयर। सर ये हमने हमने अभी आपको बोला, जैसे सिंप्लेक्स होगा ना, हाफ डुप्लेक्स होगा, सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर का फंक्शनैलिटी क्या क्या बोलेंगे या फिर फिजिकल लेयर का फंक्शनैलिटी पहले ही बोलेंगे। जैसे जी फिजिकल लेयर करके याद रखिए, जी मिनिमम और लेयर का 3 3, पहले आपके लिए इजी हो जाएगा। कि ओके सर सर, आप 5 आपका पास जो किताब है, किताब से आप जी एकदम पूरा यूज दैट टर्म हमें समझाने के लिए पढ़ा रहे, बट जी यूजुअली किताब से वो पढ़ ली। चिन्मय सर बोल दिया 2 3 टर्म। फर्स्ट वन से बीट से सिग्नल, सिग्नल से बीट, आई हैव जी टू यूज फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का जरूरत तो फंक्शनैलिटी के अंदर आता है। सर जी सिंप्लेक्स होगा ना, हाफ डुप्लेक्स होगा ना, फुल डुप्लेक्स नेटवर्क रहेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द फिजिकल लेयर। सर जी टोपोलॉजी कैसे रहेगा? दैट विल बी डिसाइडेड बाय द फिजिकल लेयर। कनेक्टर क्या रहेगा, लिंक किस टाइप का यूज करेंगे, जी केबल और वायरलेस, ऑल दिस विल बी डिसाइडेड बाय द फिजिकल लेयर। ओके, ओके सर, पहले हम लोग उसका 2 3 फंक्शन देख लेते हैं। इन दिस वन जस्ट अ सेकेंड, वी हैव टू फिजिकल लेयर का दिखाई भी दे रहा है, इट इज वर्किंग इन दिस वन। सर ये वाला प्रेजेंटेशन थोड़ा शेयर करेंगे सर, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ के समझने में आसानी होगा।
सर आप लोगों का मेल आईडी हमको थोड़ा सा, हम आपको लास्ट में मेरा नंबर दे देंगे, मोबाइल जी नंबर। सर, जी सर, जी सर। सर आप हमको थोड़ा सा व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप में सेंड कर देंगे। हाँ श्योर सर, थैंक यू सर। ओके, हम जी लोग सर, एक छोटा सा ग्रुप भी बना सकते हैं, 2-3 का पहले क्या होगा, ग्रुप में हमें अपलोड कर देने से भी आपको दिखाई देगा। जी सर, ओके, जी सर। इससे देखिए फिजिकल लेयर कहाँ पे है। पहले इन दिस हाँ, वन देखिए, पहले फिजिकल लेयर का फंक्शनलिटी बोला, हाउ टू ट्रांसमिट द सिग्नल, जी वो सर। डिसाइड होगा। कोडिंग हार्डवेयर मींस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द डाटा। हमने बाद में इसको पूरे को डिस्कस किए इन दिस वन। एक तीनों पॉइंट एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। फिजिकल लेयर का फंक्शनलिटी, फिजिकल टोपोलॉजी, स्टार बस, लाइन कॉन्फ़िगरेशन, सर पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट फिजिकल लेयर का फंक्शनलिटी के अंदर आएगा। जी सर, ट्रांसमिशन मोड क्या होगा, वो डिसाइड होगा आपका फिजिकल लेयर में होगा। दिस इज द जी सर। फिजिकल। ओके सर। नेक्स्ट वन, देखिए फिजिकल लेयर एक्चुअली क्या होगा, दिस इज द सेंडर साइड, लुक एट हियर, दिस इज द यस सेंडर साइड एंड दिस इज द रिसीवर साइड। सर। द सेंडर साइड में डाटा लिंक से डाटा आएगा, डाटा लिंक लेयर, फ्रॉम हियर आई ओके। विल रिसीव द डाटा, आई विल यस सर। कन्वर्ट दिस डाटा इनटू बीट, बीट में यस सर। कन्वर्ट करना था, इस बीट को हमको सिग्नल में बनाना था, अच्छा। थ्रू फॉर सेंडिंग थ्रू द वायर। एक मीडियम को मुझे सेंड करना था, इसलिए हाँ हम जी। इसको सिग्नल में बना लिया। देखिए सिग्नल बना लिया, किसको सिग्नल बनाया, सर ये 10 100 इसको। सर अच्छा 100 सर। कहाँ से आया, सर जी डाटा लिंक लेयर से हमने रिसीव किया। जी सर। अच्छा सर, आई थिंक दिस 1010, दिस इज द बाइनरी लैंग्वेज जो बोला जाता है। दिस आई इज द थिंक बाइनरी, दिस इज द बाइनरी। बाइनरी बिट। यस सर, श्योर। एक्चुअली सर अभी और एक बार सोच लीजिए, यू आर सेंडिंग वन मेल, आपको एक जी। मेल फॉरवर्ड करना था आपका स्टूडेंट को। तो सर अपने मेल में यू आर राइटिंग समथिंग, इट इज ओके, आप एक मैसेज दे रहा था, यू आर सेंडिंग वन मैसेज, इट इज ओके, थैंक यू करके सेंड किए। तो ये इट इज ओके, थैंक यू, हम इसको क्या एस की बीट को बना लेंगे, एस की कैरेक्टर बना लेंगे। इट इज ओके, आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एस की कोड, और एस की कोड का बाइनरी भी बना लेंगे। जी। एस की कोड जब भी आपको पास मिलेगा तो यू विल एबल टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी, और इस बाइनरी को आपको सिग्नल बनाना है। इस सिग्नल को थ्रू द वायर व थ्रू द मीडियम आपको ट्रांसफर करना है। एट द रिसीवर लेयर में, रिसीवर साइड में क्या होगा, एट द रिसीवर साइड फर्स्ट आई हैव टू रिसीव दिस सिग्नल, सिग्नल को बीट बना लेंगे। कल हमने आपसे डिस्कस किए थे एक अच्छा, कल जो सिग्नल, NRZ-L और NRZ-I बोले थे सर, आई थिंक दिस इज व्हिच यू आर शोइंग कि बाइनरी को कैसे सिग्नल में भेजा जाता है। बस बस इज इट दैट वन, NRZ एंड NRI? NRZ-L, NRZ-I, मैनचेस्टर, डिफरेंशियल मैनचेस्टर कल पढ़ाया नहीं था, आज पढ़ाएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स आर देयर। हाँ आपका जी। कंप्यूटर व्हिच वन दे हैव टू यूज, दैट विल जी। डिपेंड ऑन द सर्विस प्रोवाइडर। ओके। सर्विस प्रोवाइडर डिसाइड करेगा कौन क्या यूज करना है, एयरटेल जी। क्या यूज करेगा, रिलायंस जी। जियो क्या यूज करेगा। सो हाँ जी। डिफरेंट डिफरेंट सिग्नलिंग यूज करते हैं, किंतु वो लोगों को पता ही रहते, देयर शुड बी सम, वी हैव टू मेंटेन दैट वन, हम लोग आई हैव टू मेंटेनिंग लाइक ऑन दैट। जी सर। किंतु ओवरऑल आपको पता चल गया, हमने एक सिग्नल देने से आपको बीट बना सकते हैं, आप बीट को सिग्नल बना सकते हैं, ये सुन। यस सर, श्योर सर। हम लोग सर सर, आप जो बोल रहे थे कि ये 2-3 टाइप का सिग्नल सेंडिंग रहता है, मतलब दिस यू आर सेइंग दैट द यूजर विल डिसाइड व्हिच टाइप ऑफ सिग्नल ही हैज टू सेंड, और इज इट समथिंग फिक्स्ड कि NRZ-L ही यूज करना है, NRZ-I ही यूज करना है, ऐसा किसी कंडीशन पे कुछ कंपलसरी है क्या? सर बोथ साइड का एक एग्रीमेंट रहते जी। हैं, बोथ साइड। या। एक्चुअली हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू दिस, आई एम जी द सर। यूजर, आई डू जी। नॉट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग द NRZ-L एंड NRZ-I। ओके सर। एक्चुअली हु इज द सर्विस प्रोवाइडर, यस दैट्स हाँ सर। सर्विस प्रोवाइडर, वो लोग कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, स्टैंडर्ड, ऑन द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दे हैव टू स्पेसिफाई कि फॉर जी। दिस एप्लीकेशंस आई हैव टू यूज दिस वन, फॉर दिस ओके। एप्लीकेशंस आई हैव टू यूज दिस वन, ओके। that is they are deciding based on this one. And ओके। actually network बोलने से सर, एक्चुअली नेटवर्क बोलने से only not, it is not only internet। जी सर। आप एक सिंपल एक हार्ड डिस्क बाहर से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाया जी सर। using the cable, हाँ जी। and I am going to copy some of my movie in the hard disk. यस सर। So at that moment also these two devices are connected with the network. ओके सर। Yes or no? I am यस सर। transferring some data from my external hard disk to my hard disk in my laptop. Actually, sir, I am using some network. ओके। ओके। As a like on that in the Bluetooth also, if I am using Bluetooth, I am transferring one of my image
with my friends. Actually, Yes, I sir. am sharing this one and I am transferring one of my file. Sir, actually, I am using the network. You are also agree with me. यस सर। हाँ सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है मुझे। सर, व्हेन वी आर कॉपिंग समथिंग थ्रू वाईफाई, मतलब वायरलेस में हम लोग जो कॉपी करते हैं, और Yes. हार्ड डिस्क और हार्ड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को जो हम केबल लगा के जो ट्रांसफर करते हैं, व्हाट इज द Yes. एक्चुअली मतलब डिफरेंस, मतलब टेक्निकली आर दे डिफरेंट, और इज द प्रोसेस सेम, एंड ओनली द वायर इज डूइंग द वर्क इन प्लेस ऑफ वायरलेस? मतलब इस टाइप का कुछ मतलब No, no, no. क्वेश्चंस आता है, या इस टाइप का कुछ रहता है? आई वांटेड टू नो इट। नहीं, ऐसे क्वेश्चन में आप एक को थोड़ा सा सोचेंगे। जस्ट यू एक्चुअली ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम विल एबल टू हैंडल इन हाँ दिस हाँ। वन। जहाँ पे हमने हार्ड डिस्क का बात की, जी एक्चुअली सर। देयर इज समथिंग द इनपुट आउटपुट। ओके सर। Input output management we are either be in this one also. Actually, we are using the input output devices. Can actually this is a physical connection or link is there. यस सर। I am using some one cable is from the external hard disk to copying in my laptop. I have to use यस one physical connector. I have to use. Yes or no? यस सर। At that moment, maybe, सर, आई but एक्चुअली आई एक्चुअली आई एक्चुअली actually, said that the data transfers from one area to another area through signals, means the bit code। this जी सर। is हाँ, मतलब बिट this is कोड इज actually बिट। mainly this is mainly managed by the operating systems. Input output management unit is mainly managing that one. But ओके I ओके। am specifying like on that way. So when I यस have to going to transfer all this data, I have to यस सर। transfer that one. So ओके। actually, at that one, maybe I have to maintain some protocols. Actually, I have to maintain some. I have to follow the rules. Here यस also, I am sending the signals. I am again converting it, and I have to sum all this one. I have to copying all these things. But maybe again, I am saying, actually, this is actually handled by the operating system. This ओके is सर। actually handled by the operating system, and that is the input output management unit is there. They are यस handling this one. But ओके। maybe when two devices are connected, then I have to say this is in a network. And हाँ actually, सर। there is some driver is there. That driver is continuously communicating with my machine's device driver, and they are able to communicate. They are able to transfer the data. ओके ओके सर। On that purpose, actually, हम इसको पूरा नेटवर्क नहीं बोलेंगे, but maybe the low level में they are maintaining some connected devices there. After यस when सर। the storage copying is complete, they are saying it is already over. It is ओके showing the सर। message. ओके सर। Okay, जी सर। but the next is the data link layer. In the data link layer, actually, this is the reliable communications between two directly connecting nodes. There are two devices. There are two devices. I am connecting the from one device to another device. So in this data link layer, that is the direct connections between the two nodes. Mainly they are handling this one, is framing, dealing with the framing, flow यस control, error control, this one. This is the main three functions. यस Data link layer का आपके पास there are three main functions are there. One is the framing, one is the flow control, and one is the error control. ये तीनों पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा। डाटा लिंक लेयर बोलने से आप तीनों दिस फर्स्ट थ्री पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं। फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल एंड द फ्रेमिंग। चारों पॉइंट बोलेंगे तो आपके पास ऑलरेडी 4 पॉइंट हो गए। यस। कुछ नेटवर्क इशू चल रहे हैं लग रहा है। आपका क्लियर सुनाई दे रहा है सर? आर यू गेटिंग मी? सम नेटवर्क इशू इज देयर। नो सर, वी आर एबल टू गेट यू सर। हेलो, हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर। हेलो। हेलो।
हेलो हेलो सर आपको सुनाई दे रहा है? यस सर हेलो सर। हाँ सर हेलो यस सर हेलो हेलो Okay, sir. यस सर Okay, for the data link layer, actually there are main 3 points are there. The one is the flow control. There is another point is the error control, यस सर and there is another point is the access control. हाँ सर Flow control means when transmitter is transmitting and the receiver side there should be some synchronizations. ओके सर Maybe transmitter the rate of what you सर are we have to transmit. Maybe I am transmitting faster यस सर and the receiver side may be slower. So there should be some synchronization should be maintained so that what the transmitter is sending, I have to receive all the data. Sometimes I am receiver side also sending a message. Sir, I am busy now, please wait some time. यस सर Or like, sir, you please say, you can send now. There should be some synchronization. There should be some synchronizations between the flow control in the flow control. यस सर First functions in this one I have to define. This is the flow control. And there is another one is the error control. And there is another point is the access control. The main function of the data link layer. flow control error control access control Access control. ओके There is another one और एक point याद रख सकते. There is one is the framing. आपका डाटा लिंक लेयर का कुछ फंक्शन आपको 4 फंक्शन के लिए बोला जाएगा. जस्ट स्पेसिफाई दिस वर्ड्स: फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल एंड फ्रेमिंग. एरर कंट्रोल ऑलरेडी आप लोग कुछ पैरिटी बिट चेकिंग से पढ़े हैं ऑलरेडी. आप लोग तो ग्राफिक्स में है ऑलरेडी. योर आइडिया पैरिटी बिट हाँ सर असाइनमेंट करते वक्त सर लिखा था पैरिटी बिट. जी सर some color code parity bit. पैरिटी बिट को थोड़ा सा को बोल देते एरर कंट्रोल कैसे करते हैं. एक बार देखने से आपको पता चलेगा. जस्ट ट्राई टू गेट इट. देखिए लाइक इन दिस वे. देखिए दिस इज द सेंडर साइड, दिस इज द रिसीवर साइड. सेंडर इज सेंडिंग 110. हमको 1 बाइट सेंड करना था. 110 11 11 1 2 3 4 5 6 7 8. आई हैव टू सेंड दिस 8 बिट. हमको सेंड करना था 1 बाइट. 1 बाइट हमको ट्रांसफर करना था. इसका पास ट्रांसफर करना था टू द रिसीवर. I am using now at this moment if I am using a scheme even parity. Even parity use करना है. Even parity. yes sir. So what I have to do, I will find how many number of 1 is there. It should be number of 1 should be even. I am finding this is 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 1 is there. Yes, sir. So what I have to make it even number, I have to add another 1. This is the return bit. I have to send it. Yes, sir. Now, when I am sending this one, maybe at the middle of the path, maybe there is some error happen. 1 bit आपका change हो गया. 1 bit has been changed. When you have received, you are getting like in this way: 1 0 0 1 1 1
1 1 1 bit आपका चेंज हो गया ड्यू टू Yes. सम एरर देयर इज सम प्रॉब्लम एंड 1 बिट आपका चेंज हो चुका अब देखिए क्या होगा व्हाट विल बी हैपन आई हैव टू काउंट हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 1 इज देयर 1 2 3 4 5 6 I will say this is right. Yes, sir. I will say this is the even number of 1 is there. So I will say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. सर देखिए हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 1 इज देयर इन दिस वन सर सर कितना 1 है आपके पास इधर राइट साइड में सर राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 1 7 1 is there. So I will say this is a wrong data I have received because even number of 1 should be there. हमने एक bit हमने change किए थे. That bit 1 that has been converted to 0. Yes, sir. So देखिए this is the error control. At the sender side, I have to count how many numbers of 1 is there. If it is an odd number of 1, हमने एक 1 add कर देंगे. And if it is the even number of 1, if the number of 1 is even, like this one, 1 1 1 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Now I have to add, if I have to set like in this one, so how many 1 is there? 4. So I have to be at 0. And I am sending in this one, there is no error. If there is no error, then I have to receive it like in this way. At the receiver side, I will count how many numbers of 1. This is the 4 cell. So it is right. I am showing you just what is the error control. There is a number of schemes are there. I am showing at this moment, I am showing you even parity. Let's say there is some scheme even parity. One is the LRC, one is the VRC. There are different types of scheme is there. आपका किताब में सेकेंड चैप्टर में मिलेगा. Just you can go through it. There is something is the CRC. Yes, sir. ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम है आपको बाद में पढ़ाया जाएगा इन द सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी वी हैव टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स तो सर देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या कहां पे होगा सर व्हाट इज कहां पे वाला होगा एरर कंट्रोल सर डाटा लिंक लेयर में इट विल हैपन डाटा लिंक लेयर में आपके पास देयर आर 3 और 4 फंक्शंस आप लोग याद रखेंगे यू हैव टू रिमेंबर फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल ओके the next layer is the network layer. The next layer, that is the network layer. This is the network layer. Next layer. तो इस लेयर का फंक्शनलिटी मेन फंक्शन क्या है सर इन दिस वन सर इसमें रूटिंग होता है सर इसमें आईपी एड्रेसिंग होता है देयर इज सम आईपी एड्रेसिंग there is some fragmentation. मिनिमम 3 फंक्शनलिटी सब अच्छे से देख के रखिए. This is the mainly 3 functions: routing, IP addressing, fragmentation, network layer. अच्छा नेक्स्ट लेयर लिखने का जरूरत नहीं है ऑलरेडी हम आपको पीपीटी दे देंगे जस्ट आफ्टर द क्लास. जस्ट आप इधर से पढ़ लीजिएगा फर्स्ट पीपीटी से अभी भी बोल रहे हैं आपको मिनिमम 10 मार्क्स मिलेगा मिनिमम इतना डेफिनेशन हमने आपको दे दिया जस्ट प्लीज गो थ्रू दैट वन 10 to 12 मार्क्स आराम से मिलेगा. हमने फर्स्ट आपको डिफाइन किया फिजिकल लेयर का फंक्शन बोल दिए नेक्स्ट हमने आपको डिफाइन किए द डाटा लिंक लेयर इसका फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन किया है एंड द थर्ड वन दैट इज द नेटवर्क लेयर इसमें मेनली द मेन फंक्शन इज द राउटिंग. Yes, sir. Second thing is that packets may not reach in order, get lost. इसके लिए नेटवर्क लेयर में होता है लॉजिकल एड्रेसिंग एक होता है सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज द लॉजिकल एड्रेसिंग आईपी एड्रेसिंग जो होता है. Yes.
This layer is responsible for source to destination. Source to destination delivery के लिए जोड़ होता है. This is the network layer. And the fourth layer, that is, we have to say, this is the transport layer. This is the transport layer जहाँ पे TCP protocol काम कर रहा है. Yes. And in this one, there is one protocol. आप लोग, we are all familiar. This is the IP. IP protocol is functioning here. IP protocol. Yes, sir. In this one, there is one protocol is very popular. This is the IP. In this one, this is the TCP. Yes, sir. TCP is working in the transport layer. सर किस काम में यूज होता है? सर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी. प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए यूज होता है. सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग के लिए होता है. जो ऑलरेडी पहले इन वन आई हैव ऑलरेडी सेड, पैकेट्स मे नॉट गेट इन रीच इन ऑर्डर. एक ऑर्डर में नहीं रहते, डिफरेंट ऑर्डर में यूजुअली वी आर रिसीविंग ऑल दिस. आपको जो रीअसेंबलिंग करने के टाइम में वी हैव टू पुट इट इन द प्रॉपर ऑर्डर. Yes, sir. लोग इसमें रीअसेंबलिंग करते हैं, सेगमेंटेशन करते हैं, रीअसेंबलिंग. Yes, sir. And in this one, this is the connection controller and connection. There are two types of protocol is functioning in this layer. One is the connection oriented and another one is the connection less. The TCP is the connection oriented and UDP is the connection less. Actually, YouTube में all the video actually we are using the UDP protocol. We are not using the TCP. TCP we have to use and I have to send a mail. Reliable connection. But in the videos of we are viewing some video, actually at that moment we are using the protocol UDP. Okay, sir. And there is here also we are using something like the flow control and error control. Data link layer का जो function था, function इधर भी काम कर रहा है. One is the flow control and the another one is the error control. इतना 4-5 पॉइंट खाली याद रखिएगा. 4 करके याद रखिए, 3 to 4. हम अभी भी बोल दे रहे हैं, आपको इसमें एक फंक्शन हम बोलेंगे. Please write the functionality of the transport layer. अब 3 to 4 स्पेसिफाई कीजिए. ठीक है. Yes, sir. हाँ जी. और next one, there is another one is the session layer. Session layer. Session layer. Yes, sir. जहाँ पे हम लोग जो सेशन मेंटेन करते हैं, या स्पेसिफाइड हम सेशंस कभी लॉग आउट हो जाते हैं, सेशन आउट ऑफ सेशन आपका एंड हो गया. एक्चुअली वी आर यूजिंग दिस इज द सेशन लेयर. डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होता है. Yes, This sir. layer actually we are using for the dialogue control and synchronization. Yes. But in the real life, बाद में हम आपको बोलेंगे, session layer real life में we are not using. Real life में session layer, presentations layer and the applications layer एक ही साथ काम करते हैं. Session layer and the presentations layer and applications layer. तो तीनों layer एक साथ मिला के हम लोग बोल दिया applications layer. In the internet, actually, sometimes we are referring to 7 layers model and 5 layers model. Okay. We are using the 5 layers model. The 5 layers में इन तीनों लेयर के एक साथ जोड़ के हम लोग एक लेयर बना लिया. तीनों लेयर को एक साथ जोड़ के हम लोग एक ही लेयर बना लिया. It is like in this. 5, 6, 7 एक तीनों को जोड़ के हम लोग एक साथ 5 लेयर बना लिया. Layer 5. Okay. Look at here. 5, 6, 7 इन तीनों लेयर को. So this is the physical layer. Yes. This is the second layer is the data link. Yes, Third sir. layer is the network. Okay. Fourth layer is the transport. And fifth is Yes. the session. Sixth is the presentation. And seventh is the application. These 3 Yes, sir. layers we have to connect it at a time and I have to make it as a application. हम लोग ऐसे करके बना ले. जी. Physical data link, this is like in this one. ये बाकी सब पे तीनों को एक साथ जोड़ के हम लोग बना लिया. Yes. सबका फंक्शन दे दिया. देख लीजिए. Yeah. इतना भी याद रखेंगे. If you able to remember only that part, you will able to get some questions from this. Yes. इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा. जस्ट प्लीज इसको ये कर लीजिए. जस्ट इन दिस वन प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर एंड एप्लीकेशन. सेशन का ही काम है डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन. प्रेजेंटेशंस प्रेजेंट करने के लिए यूज होता है. सर आपके पास एक एक्सेल फाइल आ रहा है, आपको पता है ऑलरेडी ब्राउजर को जो हमको एक्सेल को ओपन करना है. समटाइम्स हम जेपीजी इमेज इज कमिंग, उसको पता है जो हमको एक इमेज व्यूअर ओपन करना है. सम वर्ड डॉक इज कमिंग, तो आपको पता है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है. तो ब्राउजर को पीडीएफ फाइल इज कमिंग, तो इफ डिफाइन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स what should be what programs I have to use to open this file, that will be decided by the presentation.
either this is audio file, either this is a video file, or either maybe this is some document file. Document file होगा तो किस type की file? Which programs will able to open that file? That is decided by the presentation. Okay. How to present? जी. And the final one is applications. ये file transfer, mail service, आप mail कर रहा है, mail sending कर रहा है, all are working in the applications layer. So आपको 7 layers model आप थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लीजिएगा. That is जी. important in this one. Okay. इस बार तो कुछ problem already we are getting. अच्छा, I am giving you my mobile number and my what actually this is my WhatsApp number. For any Okay. problem you can contact me. I will try to send you my PPT and some Yes. notes also. Okay. Yes, sir. My Thank you. 785953442. Actually, this is my WhatsApp number. Yes, sir. I can send you my PPT for the networking of all the chapters. I'll try to send you. You kindly send me your from your WhatsApp number. You kindly send me some hello or hi. Okay. Yes. Basically, if you hear from the MCA 4th semester, I'll help. Yes, sir. Thank you. Okay. Okay. Today I am covering up to this one. Okay. If I am getting some other classes also, then I'll try to cover. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Okay. Bye. Bye.